हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में वी आर गोइंग टू सॉल्व एमसीक्यूज फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हम ऐसे एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, राइट? एंड इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल। समथिंग अराउंड 10 एमसीक्यू हम सॉल्व करने वाले हैं एंड द लिंक टू दिस असाइनमेंट और दिस एमसीक्यूज विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। यू क्लिक ऑन दैट एंड यू विल गेट अ पीडीएफ ऑफ दिस, राइट? सो समथिंग अराउंड 10 एमसीक्यू है जो हम इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ये 10 एमसीक्यू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। दिस विल हेल्प यू टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, राइट? सो द फर्स्ट एमसीक्यू जो है, इट इज इफ θ1 एंड θ2 be the apparent angle of dip observed in two vertical planes at right angle to each other. दो vertical planes है, both these planes are perpendicular to each other, right? और उन दो plane में the angle of dip is found to be θ1 and θ2. Then the true angle of dip is, we have to find the true angle of dip. Most important MCQ. Remember ये board में भी पूछा गया, right? And when MCQ system was there, right? At that time this question was asked in board exam also. ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था नीट 2017 में. So our first MCQ for today is from NEET 2017, right? If you want to understand this concept, then मान लो हमारे पास ये एक प्लेन है, right? Another plane is perpendicular to it. हमारे पास एक दूसरा प्लेन है which is perpendicular to this plane. So मान लो this is the another plane. Right. So both these plane are perpendicular to each other. Do one thing, इसे थोड़ा properly draw कर लेते हैं. Right, you can see that ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है and somewhere over here is our magnetic meridian. This is magnetic meridian, right? If you see from top, अगर आप इसे टॉप में से देखोगे तो you will find that this is plane 1 and plane 2. मान लो ये है plane 1 and this is plane 2 and angle between them is 90 degree. Suppose this is magnetic meridian. So plane 1 जो है it is making angle θ1 with magnetic meridian and plane 2 is making angle θ2 and the true angle of dip is D. This is our horizontal components of Earth's magnetic field, right? If this angle is θ1, तो you can say that ये जो component होगा that is BH cos θ1. Clear? BH cos θ1. In the same way, ये एंगल θ2 है, राइट? सो दिस एंगल θ2 विल बी इक्वल टू, एक्चुअली θ2 जो होगा वो होगा 90 माइनस θ1, राइट? सो ये जो कंपोनेंट होगा, दिस कंपोनेंट विल बी BH cos, यहां पे लिख देते हैं BH cos 90 माइनस θ1. विल राइट लाइक दिस. दिस इज BH cos 90 degree minus θ1. So 90 degree minus θ1 will be sin θ. Cos 90 minus θ is sin θ. So this will be equal to, actually ये जो होगा वो होगा BH sin θ1. Let us say this is horizontal component of plane 2 and ये जो है वो horizontal component of plane 1. Clear? Now we know that what is the formula for angle of dip. We know that tan theta is equal to BV by BH. Here remember this is the vertical component of plane 1 and plane 2, right? दोनों plane का ये vertical component होगा. This is horizontal component of plane 1. This is BH1, right? और ये जो होगा this is BH2 और यहाँ पे ये जो है that is our BH, right? ये एंगल θ1 है, सो ये BH1 होगा BH cos θ1 और ये BH2 होगा, दिस एंगल इज 90 माइनस θ1, तो ये होगा BH sin θ1. क्लियर? जो हमने यहाँ पे देखा है सेम थिंग वी हैव रिटन ओवर हियर. So therefore, what will be tan θ1 in the same way? You can say that tan θ1 will be BV by BH1.
So that is equal to BV over BH1 is BH cos theta 1. Right. In the same way, tan theta 2 क्या होगा? So tan theta 2 will be equal to BV over BH2. That is equal to BV over BH sin theta 1. अगर हम यहाँ पे cos को सब्जेक्ट बनाए तो यू विल गेट दैट BH cos theta 1 will be equal to BV by tan theta 1. So that is equal to BV into tan theta 1 is cot theta 1. Right. In the same way यहाँ पे हमें मिलेगा BH sin theta 1 will be equal to BV by tan theta 2. Look, BV by BH sin theta 1 is tan theta 2. So ये टर्म को यहाँ पे ले जाओ. So BH sin theta 1 will be equal to BV upon tan theta 2. So this will be equal to BV into cot theta 2. इसे हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं. Let this be equation number 2. Squaring and adding equation 1 and 2. Square करके ऐड करो. Why we are squaring and adding? Because BH sin square theta 1 and BH cos square theta 1. So BH कॉमन निकलेगा तो sin square plus cos square will be 1. So squaring and adding equation 1 and 2. चलो 1 में LHS पार्ट है BH square cos square theta 1 plus BH square sin square theta 1. Squaring this two term and adding, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो, will be equal to BV square cot square theta 1 plus BV square cot square theta 2. So यहाँ पे BH square will be taken common, तो अंदर बचेगा cos square theta 1 plus sin square theta 1 एंड यहाँ पे हम BV square को कॉमन ले लेते हैं. सो ब्रैकेट में बचेगा cot square theta 1 plus cot square theta 2. Take this on another side. So BH square over BV square will be equal to, this is 1, right? तो यहाँ पे बचेगा cot square theta 1 plus cot square theta 2. Now यहाँ पे BV by BH is 10. So BH by BV क्या होगा? You can write here BH by BV is 1 by 10 which is cot square theta, cot theta. तो यहाँ पे BH square by BV square of this term will be cot square theta will be equal to cot square theta 1 plus cot square theta 2. This is your answer. Right. So अगर हमारे पास दो प्लेन है and both these planes are perpendicular to each other and angle of dip in each place is theta 1 and theta 2, then true angle of dip will be cot square theta will be equal to cot square theta 1 plus cot square theta 2. क्लियर? डायरेक्टली आपको ये इक्वेशन याद रखनी है. ओके, पॉज दिस वीडियो एंड कॉपी दिस. नाउ दिस सेकेंड MCQ इज a 250 turn rectangular coil of length 2.1 centimeter. So in second MCQ जो है basically from again NEET 2017 में से, second MCQ is from NEET 2017. रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए हैं 250. देयर आर 250 नंबर ऑफ टर्न्स एंड लेंथ ऑफ दैट रेक्टेंगुलर कॉइल इज 2.1 सेंटीमीटर. दैट इज 2.1 और 21 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर. विथ ऑफ दैट मीन्स थिकनेस लिखो, विथ लिखो, कुछ भी लिखो, हाइट लिख देता हूँ. चलो, हाइट इज 1.25 सेंटीमीटर और यू कैन से दैट 125 into 10 to the power -4 meter. Carries a current of 85 microampere. ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है उसमें जो करंट पास हो रहा है that is 85 microampere. So 85 into 10 to the power -6 ampere and subjected to a magnetic field of strength. जो magnetic field है that is given as 0.85 Tesla. Work done for rotating the coil by 180 degree against the torque is, you have to find the work done to rotate it by an angle of 180 degree. So initial theta 1 0 degree है and theta 2 is 180 degree. We want to rotate it by an angle of 180 degree. Now what is the formula for work done?
वर्क डन की जो फॉर्मूला है डेट इज mb इंटू cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। जो फॉर्मूला है वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, वी आर नॉट गोइंग टू डिराइव दिस, आपको याद रखना है दिस इज, अगर आप माइनस लिखना चाहते हो तो माइनस mb इंटू cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, राइट, माइनस रिमूव करके आप अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो डेट विल बी mb इंटू cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, राइट। इट मीन्स दैट हमें सबसे पहले तो m की वैल्यू पता होनी चाहिए, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक मोमेंट? मैग्नेटिक मोमेंट की फॉर्मूला है ईना, INA, राइट। सो I हमारे पास है 85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, n है 250, n एरिया इज L इंटू H, 21 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 इंटू 125 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4, राइट। सो एक काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ सिंप्लीफाइंग ओवर हियर, क्योंकि यू कैन नॉट यूज कैलकुलेटर, राइट, सो हम लास्ट में सिंप्लीफाई करेंगे। सो देयरफॉर W विल बी इक्वल टू INAB इंटू cos 180 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री, राइट। सो दिस इज इक्वल टू INAB, नेगेटिव साइन, राइट, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नेगेटिव साइन शुड बी देयर, राइट। cos 180 जो होगा दैट इज -1 एंड cos 0 इज 1। नाउ -1 इज -2 इंटू माइनस इज 2, so 2 INAB, so that will be equal to 2 into I है 85 into 10 to the power minus 6 into n is 250 into एरिया होगा L इंटू बी, डेट इज 21 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 इंटू H इज 125 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 इंटू बी है 0.85। ना लुक, यहाँ पे हम कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते हैं, सो यू विल फाइंड दिस लिटिल बिट डिफिकल्ट, सो यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस। ना लुक, ये है 85, ये है 85, राइट। 21 इंटू 125, राइट, 125 इंटू 2 करोगे तो दैट इज 250, सो नियरली 250। सो हाउ यू कैन डू दिस इज एक्चुअली नियरली 250, राइट, ये भी 250 है। सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट 2 इंटू 85 इंटू, ये 0.85 को मैं 85 लिख देता हूँ, 85 इंटू 250 इंटू 250 इंटू दिस पावर इज 10 टू दी पावर माइनस 2, क्योंकि मैंने 85 लिख दिया, राइट। सो माइनस 2 यहाँ पे है, राइट, -4 -3 एंड -6 ऑलरेडी है, सो 10 टू दी पावर -13। नाउ हाउ टू सिंप्लीफाई दिस? सो लुक, 85 इंटू 85 का कैलकुलेशन क्या होगा, 85 इंटू 85, सो 5 5 are 25, शॉर्टकट ट्रिक आपको यूज करनी है, 5 5 are 25 एंड 8 + 1 is 9, ये जो नंबर है उसमें एक ऐड करो, सो 9 8 are 72, राइट। तो ये जो आंसर मिलेगा डेट इज 2 इंटू 85 इंटू 85 7225 इंटू, नॉट 25 इंटू 25 625, पता ना, 25 इंटू 25, सो अगेन 5 5 are 25, इसमें एक ऐड करो 3 3 2 are 6 625, सो ये होगा 625 और 2 0 है, सो 62500, क्लियर, इंटू 10 टू दी पावर -15। अब यहाँ पे आप काउंट करो, तो हाउ टू मल्टीप्लाई दिस टू टर्म? तो मान लो हमारे पास है 7.22 और 7225 ले लो, 7225 एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 625। ये जो 2 0 है, इन 2 0 को मैं कट करके यहाँ पे 10 टू दी पावर -13 कर देता हूँ, राइट। सो 10 टू दी पावर -13। Now if you simplify this, अगर आप इसे simplify करो तो you will get, suppose 6 5s are 30, 0 carry over 3, 6 2s are 12, 12 plus 3 15, 6 2s are 12 plus 1 is 13 and 6 7s are 42 is 43। अगर ये आंसर है 43350, राइट, वी हैव रिमूव 0 एंड ऑल दैट, इससे अगर हम मल्टीप्लाई करें, वी आर नॉट मल्टीप्लाइंग बाय 25 एंड ऑल दैट, we got 8.6, राइट, और इसके क्लोज आंसर है 9.1। सो अवर आंसर विल बी, अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई कर रहे हो इन दिस वे, योर आंसर विल बी 9.1 माइक्रोजूल, जो क्लोजेस्ट आंसर है, क्योंकि हमने 25 मल्टीप्लाई नहीं किया था।
सो आंसर इज 9.1. दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व एमसीक्यू इन JEE एंड नीट लेवल, राइट, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है ही नहीं, राइट. थर्ड वन जो है दैट इज फ्रॉम नीट फेज 2 2016 में नीट की एग्जाम. सो दिस एमसीक्यू इज फ्रॉम नीट 2016, राइट, फेज 2. अ बार मैग्नेट इज हंग by a thin cotton thread in a uniform horizontal magnetic field and is in equilibrium state. Bar magnet equilibrium state में है. The energy required to rotate it by 60 degrees W. Equilibrium state means initial angle जो है that will be 0. So theta 1 is given as 0 degree. Theta 2 जो है that is given as 60 degree. And the work required for it is W given. We know that work done to rotate a dipole, हमने यहाँ पर किया ही, right, is minus mb cos theta 2 minus cos theta 1. So यहाँ पे W will be equal to minus mb cos theta 2 is cos 60. I am going to write directly cos 60 की वैल्यू है हाफ माइनस cos 0 की वैल्यू है 1. So this is minus mb, half minus 1 will be minus half. So this will be equal to mb by 2. So this implies that mb क्या होगा, mb will be equal to 2 into w. Let this be equation number 1. We have calculated mb. क्यों? क्योंकि हमें टॉर्क फाइंड करना है. Now we know that what is formula for torque. टॉर्क की फॉर्मूला है mb sin theta, right. So यहाँ पे mb is 2w, ठीक है. हमने क्यों ये फाइंड किया, because we want value of mb and sin 60. So this is 2w into sin 60 जो है that is root 3 by 2. So 2 cancel हो जाएगा, that is root 3w. So answer will be root 3w. Clear? ये जो ऑप्शन था वो था D and root 3w is option B. Clear? चलो फोर्थ वन. A rectangular coil of length 0.12 meter and width 0.1 meter. एक रेक्टेंगुलर कॉइल है. ये जो फोर्थ एमसीक्यू है that was from me in 2015. Rectangular coil of length of rectangular coil जो है that is 0.12 meter given and width is 0.1 meter. width की जगह पे h लिख देते हैं, 0.1 meter. Having 50 turns, number of turns जो दिए गए हैं that is 50. Of a wire is suspended vertically in a uniform magnetic field of strength 0.2 Weber per meter square. जो magnetic field है यहाँ पे that is given as 0.2 Weber per meter square. The coil carries a current of 2 ampere. जो current coil में flow हो रहा है that current is 2 ampere. If the plane of the coil is inclined at an angle of 30 degree, angle 30 degree अगर हम coil का कर रहे हैं, with the direction of the field, the torque required to keep the coil in the stable equilibrium will be. We want to find torque. हमें torque find करना है, right? मान लो ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो हमने कॉइल प्लेस की है दैट रेक्टेंगुलर कॉइल इज मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द फील्ड, राइट. एंड रिमेंबर जो मैग्नेटिक मोमेंट है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉइल. ये होगा डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट का और एरिया का, राइट. एरिया m इक्वल टू NIA, हमने यहाँ कहीं पे लिखा है m इज इक्वल टू NIA. ये दोनों स्केलर क्वांटिटी है, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी. सो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया. सो ये एरिया का डायरेक्शन है और इट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, राइट. सो अगर ये 30 डिग्री है तो यू कैन से दैट मैग्नेटिक मोमेंट इज मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द फील्ड. सो एक्चुअली यहाँ पे जो एंगल 30 डिग्री दिया गया है दैट इज विद द फील्ड बाय द कॉइल. सो दिस m जो होगा दैट एंगल जो हमें कंसिडर करना है, इसे हम थीटा डैश कह देते हैं. सो थीटा हमें जो कंसिडर करना है दैट इज 60 डिग्री. नाउ टॉर्क की फॉर्मूला क्या है, mb sin थीटा, राइट. सो यहाँ पे m क्या होगा, m विल बी इक्वल टू I N A. सो एरिया इज L इंटू एच इंटू बी साइन 60. सो यहाँ पे I की वैल्यू है 2, नंबर ऑफ टर्न्स जो है डेट इज 50, L दिया गया है 0.12, H जो है डेट इज 0.1 एंड B इज 0.2 एंड साइन 60 की वैल्यू है √3/2. साइन 60 जो है डेट इज √3/2, राइट. सो यू कैन सी डेट 2 इंटू ये 2.1 ज़ा 0.2, राइट. सो यहाँ पे 0.1 आ गया. सो 2
इंटू 50 इज 100, सो 100 इंटू 0.12 ये 12 हो जाएगा, राइट. 12 और ये 0.1 इंटू 0.1 इज -2, 10 टू द पावर -2, सो ये होगा 12 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू √3 की वैल्यू है 1.73, राइट. सो 12 इंटू 1.73, so 12 into 7, 96, so 9.6, so 12 plus 9, nearly, this will be nearly equal to 20 into 10 to the power -2. 1.73 into 12, 12 3s are 36, carry over 3, 12 7s are 84, 84 into 3 is 87, 8, 12 1s are 12, 12 plus 8 is 20, 2 points, so 20.76, so nearly equal to 20, and the answer is 0.20, so this is 0.20 Newton meter. Answer D is correct. जो करेक्ट आंसर है डेट इज आंसर डी. क्लियर, क्वाइट सिंपल MCQ. लेकिन यहाँ पे इस MCQ में जो ध्यान देना है डेट इज coil is making angle 30 degree with the field, so magnetic moment will make angle 60 degree with the field. Clear? Next, fifth one. A short bar magnet of magnetic moment 0.4 joule per Tesla. Magnetic moment is M, is 0.4 joule per Tesla is given. Is placed in a uniform magnetic field of 0.16 Tesla. B जो है that is given as 0.16 Tesla. The magnet is in stable equilibrium when its potential energy is. Look, अगर magnet stable equilibrium में है तो potential energy should be minimum. For more stable equilibrium, potential energy must be minimum. तो यहाँ पे for stable equilibrium, potential energy जो होगा that is -mb, right? So this is -m is 0.4 into b is 0.16. 16 4s are 64. So answer होगा 0.064 with negative sign, 0.064 joule. Clear? And option B is correct for this, right? ये MCQ था मेंस 2011 का, मेंस 2011. क्लियर? सो पॉज दिस वीडियो एंड कॉपी दिस फास्ट. नाउ द नेक्स्ट MCQ इज MCQ नंबर 6. Magnetic susceptibility is negative for NEET phase 1 2016. This question was asked in 2016. Magnetic susceptibility is negative for. Remember, we have already discussed that magnetic susceptibility is negative for diamagnetic material. For paramagnetic material, it is positive and small values. Well, for ferromagnetic material, magnetic susceptibility has greater value. So the answer will be diamagnetic material. So I am not writing here. Sixth MCQ is magnetic susceptibility is negative for. So the answer will be only for diamagnetic material. Seventh one, a magnetic needle suspended parallel to a magnetic field requires √3 joule of work. A magnetic needle is suspended in a uniform magnetic field and it requires work is √3 joule. The work required for it is √3 joule. It is asked in main 2012. To turn it through a degree of 60. Right, the work required is √3 joule, not Tesla, √3 joule to rotate it through an angle of 60 degree. The torque needed to maintain the needle in this position is. Look, exactly similar to this, we have already solved one MCQ. That was MCQ 2, right? Exactly similar. We want to find torque. So first of all, what is formula for work? Work will be equal to mb cos theta 1 minus cos theta 2, right? So that is equal to mb. If you want theta 2 minus theta 1, then take minus sign common, right? So this is cos 0 minus cos 60 degree. So this will be equal to mb cos 0 is 1 minus half is half. So this is mb by 2. W is equal to. So this implies that mv will be equal to 2w. Let this be equation number 1. Right, this kind of MCQ we have already solved. The torque needed to maintain the needle in this position is, we want to find torque, right? So formula for torque is mb sine theta. So here mb is 2w
into sine 60. So 2, what is W given? Root 3. So 2 into root 3 into sine 60 is root 3 by 2. So 2 will get cancelled out. Root 3 into root 3 is 3 Newton meter. So the answer is 3 Newton meter. In fact, here it is given as 3 joule. Newton meter is joule only. So this is 3 joule. Option B is correct for this. Now the next MCQ is MCQ number 8. A vibration magnetometer placed in a magnetic meridian has a small magnet. The magnet executes oscillation with a time period of 2 seconds in Earth's horizontal magnetic field of 24 Tesla. So here in 8th one, which was asked in main 2010, here the time period of oscillation is given as 2 seconds and the magnetic field is given as 24 microtesla, right? Now when a horizontal field of 18 microtesla is produced opposite to Earth's field, suppose Earth's magnetic field is in this direction, which is 24 microtesla, we are producing a magnetic field opposite to Earth's magnetic field, which is of 18 Tesla. So let us say if this is T1, T2, then B2 will be equal to 24 is already there and 18 microtesla we are producing it in the opposite direction of Earth's magnetic field. Suppose this is Earth's magnetic field B1 and we are producing a magnetic field in its opposite direction, which is of 18 microtesla, right? So 24 minus 18, the resultant magnetic field will be 6 microtesla. By placing a current carrying wire, the new period of magnet will be, you have to find new time period of oscillation. So we know that T is equal to 2 pi under root I by mb. So here magnetic moment and moment of inertia both are constant because bar magnet is same. So you can say that T is proportional to 1 by root b. So therefore T2 by T1 will be equal to root of B1 by B2. So that is equal to root of B1 is 24 and B2 is 6. 6 4s are 24. Root of 4 will be 2. So T2 will be equal to 2 times T1. T2 will be equal to 2 times T1 and T1 is given as 2 seconds. So 2 into 2 is, so therefore T2 will be equal to 2 into 2 is 4 seconds. T2 is 4 seconds. Option D is the answer. 9th one. The magnetic moment of a diamagnetic atom is, we want to find magnetic moment of a diamagnetic atom. It was again asked in main, 9th one was asked in mains 2010. Now for diamagnetic material, magnetic moment of each atom is always 0. Remember we have discussed this in our video lecture, right? That diamagnetic material, in diamagnetic material, the atom will have 0 magnetic moment. Why? Because the orbital motion of electron will be in such a direction that the net magnetic dipole moment of atom will become 0. In paramagnetic material, atom के पास permanent magnetic dipole moment है, but that magnetic dipole moment will be cancelled out with its neighboring atom. Means paramagnetic material में atom के पास dipole moment है, diamagnetic material में atom के पास magnetic dipole moment नहीं है, right? And ferromagnetic material में group of atoms के पास magnetic dipole moment है, which is called a domain, right? In domain. So यहाँ पे answer is 0. Diamagnetic atom will not have any magnetic dipole moment, equal to 0. Answer D. And the 10th one. A bar magnet is oscillating in Earth's magnetic field with a period of T. So T1 is given as T. What happens to its period of and motion? What happens to its period and motion if its mass is quadrupole? Mass we are increasing by 4 times. We want to find T2. M1 is equal to suppose M. Then M2 we are making quadrupole, means 4 times M. Now we have already written equation over here, that is T is equal to 2 pi under root I by MB. Where here जो I है, that I is basically moment of inertia. Moment of inertia, right? So moment of inertia की formula क्या है? M K square, where K is radius of gyration. So if you put this value in equation 1, let us say, तो T जो होगा that will be equal to 2 pi under root M K square by MB. Now here this M is mass and this is magnetic moment.
So let me write this mass as capital M. Let me write this as capital M for mass, right? Let this be capital M also, नहीं तो confusion होगा, right? So this is magnetic moment और ये जो mass है that is capital M, magnetic moment, right? So here you can say that T is directly proportional to root M. So T2 by T1 जो होगा that will be equal to root of M2 by M1. So therefore T2 by T1 will be equal to root of M2 है 4M upon M. So यहाँ पे MM will get cancel out. So root 4 is 2. So therefore you can say that T2 will be equal to 2 times T1. T1 is T only. So therefore T2 will be equal to 2T. Answer is T2 is equal to 2T. यहाँ पे जो ऑप्शन है that is motion remains simple harmonic with time period T by 2. Motion remains simple harmonic with period 2T. Motion remains simple harmonic with period 4T. And motion remains simple harmonic and period remains nearly constant. Motion जो है वो simple harmonic ही रहेगा and the time will be 2T. So option B is correct. Motion remains simple harmonic with period 2T. Clear? So these are the 10 MCQs which we have solved in this video lecture. In next video lecture we are going to solve next 10 MCQs, right, in the same way, but in that case most of the MCQs will be from JEE. In this case most of the MCQs were from NEET, and next video lecture we will try to complete maximum MCQ from JEE paper, right? Thank you.